बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरी कोई लाइव क्लास नहीं है, तबीयत मेरी सही नहीं है, लेकिन मैं ये सेशन करके फिर अपने काम पे लग जाऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं अनाफे के फाउंडर्स में से हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू ब्लॉकचेन। इसके ऊपर मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा आपको, जिस पे हम मजीद बात करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मुझे कोविड-19 है, तो इसलिए तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। मेरे वालिदैन के लिए खुसूसी दुआ करें, उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह हो गई है, अल्लाह का फजल है। सो आज का जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये मल्टीपल ज़बानों में डब होगी। I mean, this will go around the world, right? और ये सब जगह जाएगी। And I want to share something with you before we start the presentation, right? कि unemployment क्या चीज़ है, क्या मसला है, वजह क्या है, इसके मेन वजूहात क्या है। This is something very important, right? और उसके ऊपर भी फिर हम बात करेंगे। And then there are also a couple of other things as well, जिसकी वजह से दुनिया में जो मसले मसाइल हो रहे हैं, so on and so forth. So मैं कुछ चीज़ों को टच करूँगा। I'm going to touch a couple of things, and then मैं आप लोगों से इसके ऊपर मज़ीद बात करूँगा। So there are a couple of things I want to talk about, and one of them is unemployment. और आज का जो टॉपिक है ब्लॉकचेन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको ज़रा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। But there are certain things I want to share with you, right? दुनिया में इस वक्त बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते हैं। वालिदैन स्टूडेंट्स को पढ़ाते क्यों हैं? पढ़ाते इसलिए हैं अपने बच्चों को कि एजुकेशन अच्छी देने की कोशिश करते हैं। स्कूल्स में भेजते हैं कि भाई कॉलेज में जाने के काबिल हो जाए, कॉलेज में जाता है यूनिवर्सिटी जाने के काबिल हो जाए, और यूनिवर्सिटी में जाता है ये सोच कर के वो अपना काम कर सके, या जो है ना अच्छी जगह काम कर सके, नौकरी कर सके, whatever the case is, right? So that is the progression: school, college, universities. Essentially, in the old times, in the Islamic history, if you review the Islamic history, you will see कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, they used to homeschool their kids, homeschool करते थे। I mean, I'm a homeschooler myself, मैं बच्चों को homeschooling करवाता हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों। My wife is a full-time physician, family physician, and woman specialist, and I myself have been working within the industry for the past more than 2 decades now. ठीक है? और उस दौरान as a CISO, as a CIO, as a CTO, बड़ी organizations में काम किया, worked in some of the largest organizations, and what I realized was that homeschooling plays a very important part, because homeschooling आपको बच्चों को इस काबिल कर देती है, तरबियत दे देती है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, so on and so forth, right? Because schools का काम होता है बच्चों को कॉन्फिडेंस देना, कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। बच्चे इस कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज का काम होता है उनको यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, एक सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजन बनाना। ठीक है? और यूनिवर्सिटी को आखिरी जैसे रैले रेस होती है ना, देयर इज अ रैले रेस गोइंग ऑन। सो एक भागता है, उसको स्टिक देता है, दूसरा जाता है, दूसरे को स्टिक देता है, दूसरा जाता है, तीसरे को स्टिक देता है। दिस इज अ रैले रेस, राइट? एंड व्हाट यू विल सी इज के everyone is dropping the stick, everyone is dropping the bar. Schools are failing to prepare kids, बच्चों को prepare करना colleges के लिए and practical life के लिए। Colleges are failing to prepare them from the university for the practical life. And when I say practical life, that means कि उनको तैयार करना, fully prepare करना कि उनको अपनी life कैसे गुजारनी है, क्या करना है, so on and so forth, right? So that's the key thing. And all of them are failing each other. And this, ये सारी जो चीजें ना, इससे compounding factor बच्चों पे develop होता है।
बच्चा स्कूल में होता है, कॉलेज में जाता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, यूनिवर्सिटी से जब पास आउट होकर के निकलता है तो यूनिवर्सिटी की जो फी होती है नॉर्मली इन एशियन कंट्रीज, इट कैन रेंज फ्रॉम 15 to $20,000 जब वो बैचलर्स करके निकलते, समथिंग लाइक दैट, इन दैट रेंज, राइट। इतनी उसकी हो जाती है। हो सकता है इन द लोअर स्पेक्ट्रम $5,000 तक भी हो जाए, $5,000 तक, 5-6 लाख 7 लाख रुपए लग जाए, राइट। अब ये एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गई। अगर आप इफ यू गो बैकवर्ड कॉलेज, ओ लेवल्स ए लेवल्स बच्चों जो वालिदैन अपने बच्चों को कराते हैं, लाखों रुपए लगा चुके होते हैं स्कूलिंग में अगेन। सो एक बच्चा जब तैयार होकर निकलता है from schooling to university, at least in an Asian country, the parents have spent around $30,000 to $40,000, $50,000 तक उस पर एक बच्चे पे खर्च हो चुके होते हैं, roughly, give and take, something like that. और फिर भी बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वो काम कर सके। In the West, in European countries, and in North America and South America, it's the same scenario. I mean, but the cost is quadruple, right? In European nations, the fee is very substantial. Now there are some universities where they try to make it as economical as possible, so on and so forth. But still, parents do end up spending a lot of money on their kids, more than what parents spend in Asian countries. And in the same way, you will find that North America, US and Canada, predominantly, and Asia Pacific, in Australia and all these countries, the cost is very huge. It's hundreds and thousands of dollars, depending ke bachcha college mein kya padh ke nikal raha hai, kya karke nikal raha hai. So every institution is failing, is basically compounding. It's a compound failure, right? It's a compound failure है कि बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, but they are not able to secure employment. They are not able to work within the industry. They are not able to do many things that they want to do, right? And there is no enough guidance. There are tons of jobs, absolutely yes, right? But then again, they're not able to pursue what they want to pursue, and so many other things. So, अगर आप इसको देखें ना, the problem is that schools, colleges, universities, there's one common element: teachers. Teachers, and this is the world education sector. अगर मैं आपको दिखाऊं, if I show you कि world education sector जो है उसकी price क्या है, I mean, what is the price, right? So world education sector market cap, right? If I see like है क्या, right? The global edtech जो sector है, it grows in trillions of dollars, right? Trillions of dollars. It's almost like 1.1 trillion and going to 2.3 trillion. This is huge, right? It's actually bigger than India's economy. It's almost as close to, I would say, जो बड़े-बड़े countries की ना, जो world top economies अगर आप देखें. So, I just want to set some perspective. So, let me share my screen so that I can show you. So you will see world top economies जो हैं, United States, China, Japan, Germany, UK, France, right? And if you look at their GDP, how much they are earning: 20 trillion, 14 trillion, 5 trillion, 3 trillion, Japan, UK, 2.76, Italy, 1.89. और अगर आप देखें कि जो global US education market size, just look at the US education market size. It's 2.3 trillion, right? This is huge. Now, if you look at the global education sector is again huge. It will go into trillions and trillions of dollars. But each and every step, they are failing. And there are a couple of common elements जो हमने identify करने. First है जो है ना education की quality, right? Quality of education. Second है teachers. I mean, are teachers properly trained? Is their education verified? Are they properly उनको train किया जा रहा है?
उनको equip किया जा रहा है successful चीजों के लिए? Do they have practical experience within the industry ताकि लोगों को practical वो सिखाया जाए? एक ज़माने में long ago अगर किसी बच्चे को in the Islamic history, if you read the Islamic history, अगर किसी बच्चे को अगर साइंसदान बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, so their parents will embed that person with the scientist from day one. अगर किसी बच्चे को जो है ना ब्लैक स्मिथ बनाना है, लोहार, ठीक है ना, तो वो उसको बचपन से लगा देंगे उसके साथ, जाओ यार काम कर, because he is learning the skills from day one, right? अगर आपने किसी बच्चे को मेडिसिन में लेके जाना है, in the olden times they will embed them with the doctors from day one, जाओ काम करो. That is the missing element nowadays. What kids are doing, they're just engrossed in the books. Books पढ़े अच्छी बात, मगर practical भी सीखे. तो इसलिए स्कूल से जब बच्चा तैयार होकर निकलता है कॉलेज, कॉलेज से जब तैयार होकर निकलता है यूनिवर्सिटी, और जब यूनिवर्सिटी से तैयार होकर इंडस्ट्री में आता है, वो जॉबलेस घूम रहा होता है. क्यों? उसको पता ही नहीं कहाँ जाना. Excuse me. He doesn't know where to go. This is the biggest problem within the globally. Now in the West, they have realized and they are working on a couple of things. In North America, in Canada, in European Union, they're doing these things. वो कर रहे हैं. But अगर आप देखें Asian countries, and even like overall in general in the West as well, globally, there is a problem. It's a you can say it's a pandemic of education, right? Where the education is degrading, it's going down, right? क्योंकि इंडस्ट्री में जो स्किल्स चाहिए वो बच्चों के पास नहीं है. और you know, when I was a CIO, I'm still a CIO of my own company now. I used to interview a lot of people from different sectors in Europe, in UK, in US, in Canada. I used to interview people, and there was a complete mixed bunch aata tha. There was I've interviewed pretty much like people from South America, from Latin America, from North America, from Japan, from China. You name the country, and I've already interviewed those people. Because in the 22 plus years, you get to meet everyone, right, within the industry. And Caucasians, African Americans, Africans, wherever they are from, I've interviewed them, Middle Easterns. And this gives you a lot of perspective. What is happening? What kind of education they're having, right? तो इन तमाम चीजों के अंदर 3 key elements हैं जो मिसिंग होते हैं. एजुकेशन का कंटेंट, टीचर्स की ट्रेनिंग, और इन तमाम चीजों के अंदर अगर आप गवर्नेंस अच्छी नहीं रखें, गवर्न करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, तो the sector will fail, and in return you will fail, right? The sector is failing. So blockchain is one of those technologies that has the potential to transform the world. And if you are in the education sector, आपको जो teachers हैं उनकी evaluation करना है, उनको assess करना है, curriculum को रखना है, all of these things can be streamlined. So that is our today's topic. If you want to ask any questions, please go to stream.anafe.com. That is our website where I will take questions, right? Just go to stream.anafe.com. Let me share the screen and show you. This program is right now live on multiple channels. ये live है. इसकी recording भी चल रही होगी. Later on, you will see the recording as well. But right now, this is live. So you can go to stream.anafe.com. You can go there, register yourself, browse to the room, wherever that room is running. You can go in there and you can ask the question here, right? You can ask the question here. I'll be more than happy to answer them over here. Okay. So this is today's topic. हम इसके ऊपर बात करेंगे. Now let me share with you my presentation because this is very important. Why did we do this and what kind of things you can do?
Again, this presentation will be recorded in multiple languages. You can take it afterwards as well. So ये basically Anafe Institute hai. This is our institute. If you want to ask questions, please go to stream.anafe.com. If you're watching this on YouTube, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, Twitter पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, LinkedIn पे देख रहे हैं, you can ask questions from there as well, right? This is me, Mohammed Faisal, the president and the founder and the CIO. We have Tariq Mahmood, our CEO, Ishaq, Ansari, our CFO, Sayyid Wajahat Ali, and Dr. Asad Zaman. This project was started by British, Canadian, and Americans, nationals. And our goal was to make sure that we make education, not just any education, but the next generation education possible for everyone. And how we can change that. That was the goal. That was the predominant goal. हम कैसे कर सकते हैं? I mean, how can we do this, right? And this is what we are trying to do. So what we do is we teach you the job description from day one. Remember, as I said, in the olden times, अगर किसी बच्चे को doctor बनाना है, you embed the kid with the doctor. Mathematician बनाना है, mathematics के साथ डाल दो. If you want them to become successful blacksmith, like making swords, embed कर दो blacksmith के साथ, लोहार के साथ, and he will learn the art, right? If you want him to become a farmer, put him with the farmers. You need to create, आपको उसको वो पूरा माहौल देना पड़ेगा. You need to create that environment for him to be successful. That's the most important part. क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो वो successful नहीं होगा, right? So what we did was, हमने कहा कि हम ऐसा platform बनाएंगे where we teach the job description from day one, because there are 100 million jobs created every year. For the next 10 years, almost 1 billion jobs created only. Right now, the world population is roughly 8 billion, 7.9, 7.10 something, right? Huge number. And because of automation, नई jobs are, right? And one of those technologies, part of that is जो सब चीजों को change कर रही है, वो है blockchain. आप दुनिया के किसी भी discipline में हो, education में हो, कहीं पर भी हो, you need governance, you need security, you need compliance. और ये ऐसी technology है जिसको लाकर कर सकती है, right? So I'm going to talk about those things and relate them. So ये हमारा जो course है, what we do is we teach you the course in a way कि blockchain किस तरीके से आप उनको अपनी तमाम industries में ला सकते हैं, and one of them is education में कैसा आ सकता है. And as I said, education के अंदर degrees की verification करना, curriculum के standards को verify करना, तमाम books सबके पास standardized हैं कि नहीं है, teachers की training कैसे evaluate हो रही है, ठीक है ना, teachers के ऊपर assess करना, I mean teachers को ये भी देखना कि teachers ऐसे तो नहीं है कि on whom you have who are not allowed to teach, because वो ऐसे तो नहीं है कि उनका police record है. I mean there are so many things. Like in the West, they pay a lot of attention that if the teacher has a police record for any criminal activity, they should not be allowed to teach. Period. I mean, they should not be allowed, right? Because it's kids we are talking about. बच्चों की बात है. It's very sensitive. This is very precious. The kids are the generation, and we want them to be taught by people ऐसे लोगों से पढ़े कि जिनका character साफ सुथरा हो. I mean, they need to have a clean character, right? This is very important. Blockchain has the potential to do that. Blockchain can verify the integrity of that person. इसलिए दुनिया में जो कह रहे हैं ना, that is why they are saying कि blockchain इतनी revolutionary technology है that it will verify and like almost 10% of the global GDP will be locked into blockchain in the next 3 years. And in the next 10, 15 years, almost 50 to 60%. Because Web 3.0, and we will talk about this some other day, you know, like industry ke phases aate. There are phases. So this is industrial revolution.
the next phase, the next generation phase. और इसमें blockchain एक वो चीज है कि this has the potential to really govern everything and verify everything and make sure कि वालिदैन को और students को high quality मिले, right? और उसके लिए जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, that has the potential to do that. Now वो कैसे सीखना है, क्या करना है, कैसे करना है, so much things to do, and we will talk about those things at a high level. हम इसके ऊपर बात करेंगे, right? So दुनिया में जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जो डिमांड जो डिक्रीज है, they were wiped out. 85 million lost. 97 million new jobs will be created, and blockchain is one of them. Software and application developers for blockchain, for other applications, and blockchain is one of them, right? This thing has the potential basically in every sector. आप कोई भी sector में चले जाएं, and education is one of them. As you can see, education institution could utilize the blockchain to store credentials, data around assessments. Assessments कैसे हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, degree की assessments हो गई, transcriptions हो गई, as well as verification of knowledge transfer between parties. कि आपके जो teachers पढ़ा रहे हैं, I mean, are they really teaching them or not? The kids. This thing has the potential. This thing has already not the potential. It will deliver. काम करेगा आपके लिए. This will create an equal playing field. अगर आप ये कर लें, if you implement this thing within your countries like Mexico, you know, and I want to show you something. This is very important, and I wanted to show this. As per the Statistica, these are the top countries where remittance comes from. This is very important. I mean, and I wanted to share this with you just to give you an idea. ये वो countries हैं जहां से सबसे ज्यादा remittance जाती है. Remittance means like people send money. India, $83 billion. China, almost $60 billion. Mexico, $43 billion. Philippines, Egypt, Pakistan, France, Bangladesh, Germany, Nigeria. Yahan par they send money, right? And you can see this number is growing. Iska ताल्लुक क्या है education से? Actually, the countries where the most remittances are coming from, these are the same countries where the world labor and talent platform is coming from. Like, you know, like दुनिया में जितना जो talent है, the talent is brewing up from these countries. I'm not saying that. Go and read the World Economic Forum report. Go and see the World Migration report. And आपको नजर आएगा कि in countries से engineers, doctors, scientists, they are going to other countries. और ये जो remittance है ना, ये इनके parents हैं. The parents go outside, work, and then they send money back home to their wives, you know, so that these fathers, they send monies to their, you know, to their respective wives. And the wives are the ones who are responsible for taking care of the kids, teaching them, guiding them, sending them to schools, so on and so forth. And then their parents, you know, the same talent, the same generation then goes out to work as well. So this is a continuous cycle, right? It's a continuous cycle. There's a very good research paper by Dr. Asad Zaman, who is one of the founders. And he is from Stanford and MIT. He studied there 35, 40 years ago. I mean, before even I was born. And he did a very good piece on blockchain and labor market. You know, how can we secure it, right? So on and so forth. So education ke andar, if you really want to understand this, दुनिया में कितने सारे schools हैं, colleges हैं, universities हैं. There's a huge potential for creating companies. आप अपनी entrepreneurship में companies बना सकते हैं, which provides these verification services. ठीक है? और ये verification services क्या है? Credentials की, transcripts की, सब चीजों की. And we have created our own company, you know, utilizing public and private blockchain services that we are launching in the next 4 weeks.
It's an e-payment company, but it will also be providing document verification as well. We are using quantum computing and a couple of other things to make it very secure and stuff like that. But हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. There's a lot of things that we are doing, and 60% of the profit of this company goes back into the projects through which we support the community, right? That's how we started this company. That's how I started this company. मैंने इस तरह से start की थी कि मैं किस तरह से, because we don't go to anyone to ask for donations or anything like that. No, we self-sustain ourselves, right? This is what we do. So blockchain has the potential to morph and inject a lot of innovation in these countries, in India, in China, in Mexico, in Philippines, in Egypt. Every country of the world, दुनिया की जितनी ममालिक है, उसके अंदर आप इसको लाकर डाल सकते हैं, because that's where the money is coming from. So if you study blockchain, you have to understand the industries, and this is where when we teach you the blockchain advancement track, we teach you and cover all the things. So if I go to the website, nafe.com, and if I go to advancement tracks and public blockchain advancement track, ये एक ऐसा वाहिद track है where we are teaching you all the key aspects, सारी चीजें जो आपको पढ़नी है, समझनी है, करनी है, ठीक है? We're giving you all of those things. हम सब आपको करवा रहे हैं. ये आपको इस काबिल बना देगा. This will make you इतना काबिल बना देगा कि ना सिर्फ आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा रहा है, तमाम सिस्टम्स के बारे में पढ़ा रहा है, बल्कि इसके अलावा आपको पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम कैसे करना है, एप्लीकेशंस को डेवलप कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे सिक्योर करना है. All of these things are covered. All of these things. And some of the next generation topics like NFTs, tokens, tokenomics, and cryptos, and all those things. They're covering that, right? And कौन इसको पढ़ सकता है? जो इन इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ट्रैवल एंड मोबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी हमने सारे कवर किए, बिकॉज एनी एप्लीकेशन यू क्रिएट नीड्स टू बी सिक्योर. आपने इसको सिक्योर करना है, आपने इसको सेफगार्ड करना है. This technology has the potential to not only teach you कि ये जो ट्रैक है पूरा, यहाँ पर हम ना सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि कैसे करना है, बल्कि आपको एक बड़ी मजे की चीज दे रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग जो चीजें आपको मिलती है. When you study the blockchain advancement track, जब आप पढ़ते हैं, आपको कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक उसका मिलता है, because we teach you all the industries, we teach you, the development of the applications and everything, give you the labs, but we also give you the experience. Because what you're developing is your resume being developed. ये resume आपका बन रहा होता है. And we mentioned that you worked as a blockchain developer. That will help you go into the G20 countries. ये आपके लिए दरवाजे खोल देता है G20 countries में जाने के लिए. नहीं जाना, घर से बैठ के काम करना है. This is the most friendly track for women, ख़वातीन के लिए. Our mothers, daughters and sisters, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, घर से बैठकर, working from home, they can easily work for any multinationals, locally, nationally or internationally. They can do that. This thing has the potential. But you need to learn this thing. ये आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. If you do that, you can be successful. So ये चीज बहुत ज़्यादा important है, and this is something we have covered bit by bit, piece by piece in all of the teachings. So if you understand this, आपका काम हो गया. Then you will be able to understand all the key things, right? So इसमें तमाम industries को कैसे पढ़ाना है, कैसे इसमें काम करना है, तमाम key standards, everything. And as I was saying, ये program ऐसा designed हुआ है कि you can teach your kids right now, from right now, if they are in school ages, class 8 and above, 10th, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, whatever grade they're studying, they can study this. Professionals, bachelor's, masters, they can study this. They can study this program. Basically, professionals जो अपने bachelor's, masters कर चुके हैं, कर रहे हैं, they can study it and they can work in all of these industries. This also opens door for you to not only being able to like blockchain advancement track, also opens door for you to go and study within our university, जो हम 2023 के February में खोलने के लिए जा रहे हैं, right? If you want to know more,
you can go to our website, and go here, annafe.com, scroll down, and here you will see our university. Click here, and inshallah, in the next 291 days, we will start our February 2023 session, right? So you can learn all the things from one place in multiple languages. Okay? If you don't want to go to our university fee is very low. बच्चे को कहीं और भेजना है, UK में, EU में, US में, ठीक है? You can send it. पढ़ाकर आप उसको काबिल कर देंगे, ठीक है? This is the data coming from the UK Home Office. कौन सी country से UK लोग पढ़ने जाते हैं? And this is very consistent. So वो 10 countries को छोड़कर, if you look at these 21 countries, like 20 countries, this is the bread and basket of the world for talent. China, India, Nigeria, Pakistan, Hong Kong, United States, Bangladesh. You know how many doctors are there who are of Pakistani origin in US? You will be surprised. Do you know how many Pakistani doctors are there in UK who are working there as family physicians, as specialists and whatnot? You'll be surprised. In Germany, you know how many doctors are there of Middle Eastern origin from Egypt, specifically Egypt? You'll be surprised. The world is running on talent. दुनिया जो है ना talent पे चलती है. It's powered by talent. And this talent is coming from these countries. So education यहाँ जो है, that's the most important thing. और जो 100 million jobs every year जो create हो रही है, if you teach your kids, आपका बच्चा अपने मुल्क में बैठ के इन G20 countries में काम कर रहा है, ऐसे बाहर निकल जाए. This is huge. This is what you need, right? इस वक्त हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को पढ़ रहे हैं, they are already working in some of the top companies in the world, right? So what is stopping you from doing it, right? So अगर आप इसमें annual subscription पे आते हैं, we give you access to everything. Whatever is released, you get access first. Whoever comes on monthly, quarterly, 6 monthly, they get access as per the fee that they pay, right? And this is what we're doing. CV preparation karna, job search, admission in any college, university. We teach you all of those things. सब चीजें दी जाती है. उसके लिए भी अगर आपको चाहिए, you know, internship for students, affiliate program, all of these things आप यहाँ से click करके जा सकते हैं. Internship apply करनी है, you have to go through this. ठीक है? ये सिर्फ उनके लिए जो annually fees pay करके आते हैं. Interview preparation का भी link आपको वहीं पर in few days time you will find the interview preparation link भी यहाँ मिलेगा. सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा. Terms and conditions if you want to read. Excuse me. All of those things are mentioned here. And Qard al-Hasana. Apply for Qard al-Hasana. If you can't afford to pay, you can earn your way through it. Apply now. You can apply and you can become an affiliate and be able to support your own fee. अपनी फीस को खुद सपोर्ट करने के काबिल हो जाए. You know, people are earning thousands and thousands of dollars and they are supporting their education. I always tell them, पैसे earn करो, बड़ो पैसे से जो है ना अपने आप को support करो, अपनी तालीम को support करो. Because education is something that will always help you and benefit you rather than anything else, right? So we will finish the presentation here. I will open the floor now. मैं floor open करूँगा. If anyone wants to ask any questions, they can do so. If anyone who wants these programs, all of these, and there are different one of them, right? जो हम सारे कर रहे हैं, AI है, ITGRC है, SysOps है, IoT and IIoT, blockchain, DevSecOps, quantum, orbital satellite, AR and VR, data science, big data, all of them. You can embed these in your schools, in your colleges, in your universities, in your own local languages, because this program is being taught in all the globally spoken languages. जो globally languages बोली जा रही हैं, we are already teaching them. This program is right now available in Urdu, Hindi, English, Spanish, Portuguese, French, Arabic, Bengali, Indonesian, all of these languages. So what is stopping you from not being successful? The only thing there is you yourself. खुद अपने आप को अगर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाना, then you can't go further. So I will take a pause here.
and I will open the floor to ask questions. जब ये recording चल रही होगी, when we are playing this in a recorded mode, you can always ask questions on stream.anafe.org, and you can always email it to us as well. यहाँ पर आप उसको email भी कर सकेंगे. Our goal is to make sure कि जिसके जो भी सवालात हैं, we are able to answer them. So if you have any questions, please go to stream.anafe.org, or you can always go to our support as well, anafe.com/support. Click on it, open it, and there you will see a chat button. You can click on the chat button. You can open a chat with an agent, and he will be able to answer you whatever questions you have. I will stop the presentation here and will open the floor for live questions. Jazakallah khair. Okay, Yusuf. So यहाँ से इसको कट करवाकर multiple ज़मानों में डब करके इसको आगे ले जाना. Okay. We can now open the floor to ask questions. किसी की भी सवालात हैं, they can come forward and they can ask questions. सबसे पहले मोहम्मद रशीद जी बोलिए. First of all, Assalamu alaikum. We discussed yesterday, we had that Canada versus UK thing. I'm the same Rashid. Yes. Okay. So after discussing with you, I had a brief discussion with Hafiz Bhai as well. I had a few queries. So the point where, to be honest, I am stuck is that I am very much actually look forward to going for UK for masters, the one that you suggested. However, how can I cover the study cost and the living cost? Because what I was planning, if I could take my family with me, I have wife and 2 kids. So whether there's option to take them, or whether there's any scholarship options available if I take the next September or next February session. So UK doesn't give a lot of scholarships. They don't. Okay. So if the fee is 20,000 pounds, they might say, okay, you get like £4,000 pound scholarship, and then you end up paying the remaining fee, right? So वो fee आपको pay करनी पड़ेगी. You have to pay the fee. You can pay 50% of the fee. The more fee you pay, the more chances you have to secure a visa. You know, if I show you, as I showed you last time, in Bangladesh, the chances of, like, if 100 people apply for the visa, 94%, like 94 of them will get the visa, 6, will get it refused, because normally refusal का जो वजह होती है वही होती है कि documents पूरे नहीं है, they don't have the documentation, or they're missing some information, right? So being as a Bangladeshi, highly qualified, for you to get a visa in UK is 100%, inshallah, right? Yeah. So that's one thing. But as I said, like, just give me 1 minute. As I said, one of the things that you have to understand is कि जो आपको सोचना है, समझना है, वो support कैसे करोगे? You have to show, UK में अगर visa लगवाना है, you need a couple of things. The first thing you need is, you need admission offer letter. You can get the admission offer letter if you apply, if you study the advancement track, fill out everything, and ask us to make your resume, because when we make your resume, that will look good. Because मेरे पास ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने marketing में किया, finance में किया, and they are studying MSc in cybersecurity, MSc in data science, and all those things. They had no experience, but the way we designed their resume and what they studied with us enabled them to get admission. So that's what you have to understand. So taking admission and the advancement track will help you. Absolutely, yes, inshallah. Right? Second thing जो बहुत important है, जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हें समझना है, वो तो admission letter आ गया, then you need a bank statement. You need to show a bank statement. If you are going to take your whole family, then you need a bigger statement. At least 60,000 pounds you have to show, right? That you have enough money in your bank. Now, this is just a bank statement. You can borrow money from people, you can show the statement. This is how normally people do, right? Once you that's how I was preparing for Canada as well. Like, I have to show the bank statement. This is normally, even the Home Office knows, right? Okay. If a person has 90,000, pounds in his bank account, why would he go to UK to study?
right? In the first place. So they already know this. But obviously they need talented people. They need people who are smart enough. So agar tumhe isme karna hai, tum kar sakte ho. Now, once you go there, if you study DevOps and advancement track and public blockchain advancement track, which both of them comes with CAP, I can give you this assurance, inshallah, that you don't have to work in a chicken shop, Khan Fried Chicken Shop, or there's a lane known as Bethnal Green Lane, right? Brick Lane. Brick Lane is a lane in London where you will find all the Brick Lane, London, right? All the Bengali restaurants. All the Bengali restaurants are there. So if you want to go and to UK with this confidence that you will not work at a at a Bengali restaurant, then you better start studying right now and apply for February. So study DevOps advancement track, public blockchain advancement track. You will have all the skills. By the time you will land there, they will offer you a work permit and say, you know what, we would like to get you hired. It's okay, you're studying, you're doing all of those things, but we want you hired. That is the only way you can do it. If you study, if you don't, then you will end up working at the Brick Lane for at least 1 year until you get your work permit after completing your degree, right? So Brick Lane is a very famous place where you will find all the Bengali restaurants, all the Bengali. So it's a famous for, like this is the same place where like Jack the Ripper, used to murder people, but now all the famous curry houses are found in Brick Lane. There's a marketplace, because every Saturday I used to go out. Sunday market and Saturday market used to be there, right? So this is something that I used to go around to buy stuff and whatnot. So this is the place if you really want to be. But if you want to go there with the intention that you'll be able to secure a job, then you better start studying right now, so that before you go, you have all the skills you need to secure yourself. Look, I'm just going to search DevOps in London, and you can see junior DevOps engineer. The salaries are starting from 45,000 pounds, right? This is the skill you will already have, because अगर तुम DevOps का advancement track पढ़ते हो, right? तो तुम्हें वहाँ पर लेटर जो मिलेगा, उस लेटर में लिखा होगा कि तुमने यहाँ DevOps का हमारे साथ काम किया, public blockchain का हमारे साथ काम किया, right? तो जब तुम वो और तुम्हें सारा क्लाउड की सारी टेक्नोलॉजीज पे काम भी आता है, right? क्योंकि वो तुमसे वो मांग रहे हैं कि तुम्हें CI/CD की पाइपलाइंस पे आता हो, टेराफॉर्म पे क्लाउड आता हो, क्लाउड फॉर्मेशन पे काम आता हो. We are teaching you all of these things. हम सब पढ़ा रहे हैं. There's nothing, and we are giving you, आपको वो लेटर भी मिल रहा है, right? And blockchain अगर पढ़ के जाते हो, तो again blockchain की भी जो jobs हैं 40,000 से शुरू होती हैं, and you will be able to apply for those things, right? In terms of working, right? So my recommendation to you is, go and study. Don't go for the September session. Be fully prepared. Go for the February session. Start studying both of them. Memorize these things. Even अगर तुम बांग्लादेश में भी काम करते हो, how much salary are you earning right now? Sir, per month is 2 lakh Bangladeshi taka, so it's something around 2,900 Canadian dollar. I was thinking in terms of Canadian dollar. It's a good salary. देखो बांग्लादेश DevOps लिखो और ना तुम्हारी अच्छी सैलरी है, तुम जा सकते हो. I mean, तुम इससे और अच्छी देखो पकड़ सकते हो. और अगर तुम यहाँ पर देखते हो कि तुम्हारी सैलरीज क्या है, सैलरी का डेटा क्या है, ठीक है, you will know, तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर DevOps इंजीनियर ढाका के अंदर, whatever the case is, जरा देखते हैं कि जॉब्स पे वो कितना है ना. तुम्हें ज्यादा बड़ी जॉब बाहर मिलेंगी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी DevOps के अंदर तुम्हें you can find good jobs, right? Because government is investing on these sectors and banks are investing on these sectors, so it's likely to grow fast next year. This is going to grow significantly faster, because this is where, as I said, I showed you the countries where the top remittances are coming from, right? Yes, if you those things, right? And if you pay attention, you will find
कि वो कंट्रीज हैं जहां सबसे ज्यादा जो ना रेमिटेंस जाती है, राइट? और ये वो Yes. रेमिटेंस है जहां से लोग जो है ना पैसे कमाते हैं, राइट? सो इफ आई से Mhm. top 20 countries for global remittance, if I show you that you'll be surprised कि उसमें बांग्लादेश का भी नाम है, right? So Yeah. Bangladesh is right, Bangladesh is there, right there, and I'm going to show you that. So तुम्हारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है, you can safeguard yourself, you can upgrade yourself, because ये मौका है तुम्हारे पास. देखो top 20 countries के अंदर Bangladesh is there, $21 billion, $22 billion, right? There is an Yes. increase of 18.4% percentage from 2019, right? Mhm. China, Mexico, Philippines, these are the top countries where most of the money is moving around. So you have a good future, but you have to build upon that future. तो इससे बाहर निकलना है, Yes. go and study. Okay, sir. That's what Okay, you have sir. to. बनाने की जो तुम बात कर रहे हो, in Bangladesh you already answered yourself. तुमने कहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है? ये पूरा प्लेटफॉर्म बंगाली जबान में हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं. जाओ उनको बोलो भाई जाओ, go and study, look at this platform. If you bring 100 people, तुम 100 लोग लेकर आए, तुम्हारे नाम से तुम गए, तुमने अपनी यूनिवर्सिटी में बताया, कॉलेज में बताया, अपने स्कूल में बताया, अपने खानदान फैमिलीज में बताया, अपने ऑफिस में बताया कि यार देखो ये पढ़ लो, बाहर निकल जाओगे, मैं भी जा रहा हूँ, ये कर लो, इस तरह से कर लो. Go to universities, be vocal on the social media, use the social media for something good rather than talking about movie, sports, right? Yeah. तो अगर वो किया और वो आते हैं, so अगर तुम्हारे नाम से 1000 लोग आए, 1000 people, और हर बंदे ने जो है ना फीस दी $2000, ठीक है? So that makes it 200,000. You take 10% of it. That's $20,000 there for you. So actually more than that. So 2 million का मतलब कि तुम उस पे कमा सकते हो. So it's up to you कि तुम्हें पैसे कैसे कमाना है. यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो काम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई what they're trying to do is कि यार हमें किसी भी तरीके से अपनी फीस निकालनी है, ठीक है? So 2 million अगर तुम 8% लेते हो, that's $160,000 for you. You have enough fee. If you have that kind of money, अगर तुम्हारे नाम से 1000 बच्चे आते हैं and they pay this and whatnot, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा. I will advise you to go and study at Oxford and Stanford. I'm doing my PhD at LSE, ठीक है now. MashaAllah. Yeah. MIT and Stanford. I'm telling you now, go and do it. But I'm doing my PhD after more than 2 decades of experience. Okay, na? So I'm not like a bookish PhD. Yeah. What I'm telling you is कि तुम्हें अगर काम करना है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, go and pursue it. Okay. Yeah, this is what I was aspiring. If I want to target, let's target something big. देखो, if you have the money, if you bring in 1,000, देखो, what is the population of Bangladesh? What is the population? It's like 170 million plus. 170 million, right? Let's make it something like 200 million. Just round it off. Okay. 1% of 200 million will be 2 million, right? Yeah. Yes. Can you reach out to those 2 million? देखो कितने लोग हैं जो कर्द अल हसना पे पढ़ना चाहते हैं. If they come on कर्द अल हसना, pay the minimum, even then you get the fee. ठीक है? Even then तुम्हें कमीशन मिलेगा. ठीक है? अगर वो उसमें पैसे पे करते हैं, whatever the case. So what I'm explaining it to you is, you have a great potential to earn. Become the ambassador of Bangladesh, Faman Nafe, and say कि भाई I'm here to guide all of you to be successful. बांग्लादेश में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है, पाकिस्तान से ज्यादा गेस्ट, पाकिस्तान से ज्यादा जाता, ठीक है? So और they are very sharp. मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पता है बांग्लादेशी अभी कहाँ क्या कर रहे हैं. They were students when they came to UK, and I was teaching them at a university, and I was working at the same time in London. Those students, I will give you some names. Those students, they are now teaching at British universities and working in the industry as well. MashaAllah. Amazing. They are from Dhaka, from Sylhet, from all those places. And they said, okay, Faisal bhai, we were just working at chicken shops. Someone told us about, and they came to see me.
see me like कि भाई कौन है दाढ़ी वाला टोपी वाला, who is this who's teaching everyone? And they did that, and mashallah, they are now, you know, one of my students is teaching at Greenwich University. Okay. And he's also teaching at another university, digital forensics. So you can imagine, and working in the industry as well. So तुम्हारे पास पूरा मौका है. You have to work on it. मेहनत करनी पड़ेगी. You have to work hard. If you do that, there's a great potential for you. Thank you, Faisal bhai. So lastly, so where should I start from the which advancement track? Like there are 3 advancement tracks. So No. CAT is embedded in everything. So if you start from DevOps advancement track or public blockchain, any one of those, start there. And how much time do you have? If you have 3 hours a day, if you can spend 3 hours a day studying and whatnot, right? 1 hour to my office mein milega lunch ke dauran, right? You know, when I was working in a warehouse in London, in my school, in my university days, the fee was too much. In those days, the fee was £12,000. You know, 22 years ago. Okay? The fee was too. अब हम लोग अपनी जो कॉलेज में हम लोग खोला है उसकी फीस भी हमने 12,000 रखी है. Now the fees are 15,000, 18,000, 20,000 pounds per annum. And I said, no, this was the reason I said we're only going to charge 12,000 pounds. Okay. That's what we're charging. But we are teaching you the next generation stuff, and none of our graduates will be unemployed because जो उनको पढ़ा रहे हैं, the job description. So that's what we're trying to do. So you can come to our college in February, but if you earn $60,000, I would suggest you to go to and study at Oxford or Cambridge, because that's a stamp. It's a stamp that you will get. Even if you study from Oxford or Cambridge, you won't get the job. No. Okay. Job is something you will get from the skill, right? Skill तुम काम कर सकते हो. Skill तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएंगे. Start from DevOps advancement track or public blockchain advancement track. Spend, if you have 3 hours, study CAT. CAT is दोनों के अंदर CAT मिलेगा. You will find CAT in all of them. CAT तुम्हें मिलेगा. Study CAT. Then 1 hour a day, blockchain 1 hour a day, and DevOps 1 hour a day. If you know, maximum you can follow 3 tracks, not more than that. I mean, it's essentially 2. CAT is part of them anyway, right? So you can start there. Start learning Python and all those kinds of things, because there's a tons of jobs in blockchain and DevOps. So तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है. Pursue it. Okay, thank you, Faisal, for your time. Thanks a lot. Yes, Haslan. Go ahead. Sir. Walaikum salam. Sir, I have a couple of questions right now because I'm currently studying in CAT first month, and I am seeing this Nafe lyrics video, but I am unable to download or subscribe it. Don't worry about it. We will remove Nafe Linux anyway, because now you will find Linux running in your browser. So those who are paid, जो 6 महीने की फीस पे करेंगे या साल की फीस पे करेंगे, तो उसको पहले से ही ब्राउजर के अंदर ही लिनक्स मिल जाएगी. We are about to release it. ठीक है? Okay. और तुम्हें कोई मसला नहीं होगा. जो मंथली पे होंगे उसको 6 महीने मिले. You have to wait. ठीक है? अगर तुम्हारे पास उस वक्त तक तुम्हें खुद the file is too big. If you can download Parrot OS कर लो, जो ना Kali Linux कर लो, it's fine. It will work for you. Right now, I have installed CentOS, and I mean, you will find different Linux containers on our portal for different purposes. So, अगर तुम blockchain पढ़ोगे, blockchain की environment में बनी बनाई मिलेगी. अगर तुम CAT पढ़ोगे, तो CAT में तुम्हें अगर labs कर रहे हो security की, तो उसकी तुम्हें labs अलग मिलेंगी. CentOS का container तुम्हें अलग मिलेगा. You will find all these things. Okay, sir. Apart from this, sir, I want to ask that I have a gap in my study, relatively 6 years, because I couldn't complete my BS electrical engineering. So, do I have any chance of getting job? Because this is my ultimate. This question comes to my mind. Dekho, there is a person. His name is. He did his diploma in associate engineering. He's a diploma, right? उसका diploma. और वो 6 figure salary पे पाकिस्तान में काम कर.
So Sir, I have currently have 2 offer letter from Ireland University, and I'm planning to apply my visa right now in July. चले जाओ आयरलैंड चले जाओ। आयरलैंड पढ़ने के बाद तुम्हें जॉब तो यहीं से पढ़ने से मिलेगी। आयरलैंड पढ़ने के बाद तुम ऐसे घूम रहोगे। अगर तुम्हें जाना है तो कोशिश करो अपने आप को सितंबर या फरवरी के सेशन में, सितंबर सेशन में जाओगे, जाने से पहले जी पहले सर। फरवरी सेशन में चले जाओ, ज्यादा बेहतर है, ताकि तुम डेवऑप्स और वो सब पढ़ के जाओ। देखो आयरलैंड के अंदर एक चीज है, लेट मी शो यू, जी व्हिच इज सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आयरलैंड के अंदर इस वक्त जो जॉब्स है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर है, और वहां जी पर जी। वो तुम्हें बिठा देंगे, बुला देंगे, सब काम करवा देंगे अगर तुम्हारे पास राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आयरलैंड अगर हम देखते हैं, ये रहा आयरलैंड। ठीक है, और तुमने कहा कि तुम यहाँ से डेवऑप्स पढ़ के जा रहे हो, एक्सपीरियंस में लेके जा रहे हो, तो देखिए यहाँ पर देखो 1360 जॉब्स नजर आती है। सैलरी एस्टिमेट 40,000 यूरो से शुरू हो रही है, 60,000। ठीक है, राइट देख राइट। सकते हैं। और रिमोट डेवऑप्स, रिम सपोर्ट, हिटाची, डेवऑप्स इंजीनियर। अच्छा, यहाँ इनके पास टैलेंट की बहुत कमी है। ठीक है, अगर तुम ब्लॉकचेन पढ़ के जाते हो, ठीक है, तो ये एक जॉब पोर्टल में तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम जाके सर्च करोगे तुम्हें बहुत अच्छी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर तुमने वो चीज पढ़ के चले गए तो तुम जल्दी सेटल हो जाओगे, क्योंकि ये हाईटेक सेक्टर है, इसमें उनके पास टैलेंट की बहुत शॉर्टेज है, तो वो तुम्हारा वर्क परमिट स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना, लेकिन मैं कहूंगा कि फरवरी में जाओ, डेवऑप्स का और पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पूरा पढ़ के जाओ, बोलो मैंने सब लैब्स कर ली, एक्सपीरियंस लेटर बनवा के जाओ, फिर बोलो मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और उसके बाद तुम जाओगे तो बात भी है। ओके ठीक, ओके वरना अदरवाइज तुम फिर किसी किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो, ये डिफरेंस। वकार शम्स बोलिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं कराची से हूँ और मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम के बाद मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, और काम के हवाले से यह है कि मेरा ज़्यादातर काम जो है वो इंपोर्ट रिलेटेड है, यानी चाइना से माल वगैरह मंगवाना, उसकी सर्विस देना, और कुछ काम सेलिंग है ऑनलाइन में दराज की। तो मुझे एक दोस्त ने ये बताया था कि इसको वो करो, स्टडी करो, देखो, और वो आपके स्टूडेंट भी हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। करना क्या चाहते हो पहले ये बताओ। करना ये चाहते हैं कि कोई स्किल ऐसी हो कि आगे उसे बढ़ सके कुछ जो तुमने स्कोप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया है उसमें तुमने क्या किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तुम क्या करते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये कि इंपोर्ट जो चाइना से अगर किसी ने माल मंगवाना होता है तो उससे जैसे चाइनीज जो सोर्सिंग है और उससे डॉक्यूमेंटेशन है, इस तरह के काम मैं तुम्हें एक बड़ी काम की चीज बताता हूँ। अगर तुमने, है। जो तुम्हारे पास नॉलेज है ना, बड़ी काम की है। बिस्मिल्लाह, सॉरी, माफ करना। अगर तुमने इसको पब्लिक ब्लॉकचेन के एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ा, तुमने सब चीजें पढ़ी, तो यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो ना सप्लाई चेन का बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में। काउंटरफिट सप्लाई गुड्स, चेन। ठीक है, काउंटरफिट गुड्स का मसला है, 10,000 किस्म के इश्यूज है। ठीक है ना, तुमने एक एप्लीकेशन बनाई पब्लिक ब्लॉकचेन या प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर, और तुम उसको चाइना में इधर उधर सब जगह लेके गए कि आप इंटरनेशनली, हम लोग इसको, आपकी जो गुड्स हैं उसको वेरीफाई करके आगे लेके जा सकते हैं, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी सोर्सिंग की इंफॉर्मेशन सारी हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं डॉक्यूमेंटेशन वाला, वो सारी जो है ना वेरीफाइबल डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन, जो कि कोई किसी तरीके से तब्दील नहीं कर सकता, तुमने उसको वो पूरे सिस्टम बना के डाल दिया, तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओ। पाकिस्तान में बैठ के काम करो, मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम ही अलग हो जाए। कोई भी नहीं कर रहे, बहुत सारी इसमें तुम्हारे लिए पास अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं कर रहा। हमने कंपनी कोई नहीं बना कर। ली, लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मगर हम पेमेंट प्रोसेसिंग को देख रहे हैं कि कोई भी पेमेंट होगी, बाहर से रेमिटेंस आएगी, हम बता सकते हैं कि वेरीफाइबल बंदे से, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन तमाम चीजों को रोकने के लिए, राइट, सही है ना। जी और जो जी जो टैक्स चोरी करते हैं उसके लिए फलाना 10 किस्म के मसले हैं, ठीक है, इश्यूज हैं, तो हम वो जो एप्लीकेशन है सब जगह लेके जा रहे हैं, सब कंट्रीज के अंदर। ठीक है,
ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो तुम्हारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि अगर तुमने पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ा, तो जब तुम पढ़ो उसको, तुम बोलो यार कि ये जो चीज सीख रहा हूँ मैं इसको किस तरीके से कहाँ किधर कैसे लगाऊं। अगर तुम्हें ये चीज समझ आ जाए तो तुम बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और अगर तुमने वो चीज बना ली तो तुम यहाँ से मिडिल ईस्ट भी जाके काम कर सकते हो, क्योंकि वहां तो सारा काम ही ब्लॉकचेन पर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सब चीजें वहां पर चली गई है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तुम्हें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। ब्लॉकचेन ऐसी चीज है, मगर इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अगर तुम्हें इसमें जाना है। अगर तुम्हें इसमें नहीं जाना, जिधर बैठे उधर ही बैठना है, काम करना है, फिर मर्जी तुम्हारी। दैट इज द डिफरेंस, इसमें कोई और दो राय नहीं। जी मतीन साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम, हल्की सी आवाज आ रही है। अच्छा सर, अब कैसे? सवाल पूछ ले, टाइम कम है मेरे पास। सर आवाज आ रही है अब? माइक सवाल ये कि मैं कह रही, माइक का बंदोबस्त करके आओ, बहुत आवाज खराब है, अच्छी नहीं है आवाज। खालिद आप बोलिए, मैं तुम्हें दोबारा चांस दूंगा जब तुम्हारा माइक का मसला हल हो जाए। खालिद दोबारा बोलिए, खालिद आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। मैं सवाल वहां पर स्ट्रीम पे भी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, जिसको सवाल करने हैं वो स्ट्रीम पे भी कर सकते हैं। जी बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? सर मेरा एक प्रॉब्लम था सर। सर मुझे असल में ना एक प्रॉब्लम मैंने कोर्ट में भी शेयर की थी गनीमा लैब के हवाले से। सर उसमें जो स्टार्टिंग जो लिंक होता है ना, स्टार्ट वीडियो अबाउट जो लेक्चर्स वजह से फ्लैन पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो वो सर वो मुझे लेके नहीं जाता, एरर जनरेट कर देता है। पोर्टल पे लेके जाता है ना ट्यूटोरियल उसका, तो वो लेके नहीं जाता मुझे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तुम उस कोर्स के अंदर जाओ, वीए का कोर्स जो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का, वहां वो वीडियो, इनको असूलन तो उसको लिंक को ठीक कर देना चाहिए। ठीक है, और मैं लाइव जी बैठकर सर। कोई सवाल का मसला हो मेरे पास आए तो सर वल्नरेबिलिटी उसमें जाओ, वहां तुम्हें फ्लैन स्कैन का पूरा वो मिलेगा, क्योंकि वो लैब सारी मैंने डिजाइन करवाई है, मुझे पता है। ठीक ठीक है, है सर। ये मैंने डिस्कॉर्ड में भी यानी कि शेयर किया था, तो ये एरर तो उन लोगों को भी उनसे प्रूफ भी प्रोवाइड की थी। लोग जो है एक ही जगह वीडियोस और लैब्स को एक ही जगह रख रहे हैं। जो हमारा नया प्लेटफॉर्म अभी आ रहा है उसमें कंटेनर्स जो मिलेंगे आपको, लेकिन वो मिलेंगे छठे में। तो अगर आपको कंटेनर्स में काम करना है कि आपकी ब्राउजर के चल रही है, तो आप जो साल पे आएगा पहले दिन से मिल जाएंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेंगे, व्हाटएवर द केस इज। ठीक है, तो वो वहाँ आपको गनीमा लैब्स तो फिर भी ये वाली मिलेंगी, अगर आपको प्रॉब्लम देखनी है आपको कर सकते हैं। नई लैब सारी सारी जो है वो आपको कंटेनर से मिलेगी। और वहां पर हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड, वही प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, अमेज़न का वीडियो ऑन डिमांड, जिसमें हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्टेड रहेगी और हमारा काम भी उसमें चलेगा। सबके सब तुम्हें वहां मिलेगा। वेट 3 से 4 हफ्ते और लगेंगे इसको लॉन्च करने में, बट उसका मसला तुमने सही कहा है, अगर इतना इशू है उसको ठीक कर देना चाहिए। मैं लिख लेता हूँ उसको। थैंक यू सर। सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो। सर मैं असल में ना एफिलिएट मार्केटिंग में करना चाहता था, ताकि ना, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट जो डेवऑप्स है ना उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो वो मैं कवर करना चाहता हूँ, ताकि इन केस मैं अभी कैट का स्टूडेंट हूँ। तो सर मेरा एफिलिएट में अकाउंट का रिप्लाई तो आ गया था, लेकिन सर उसमें मेरा पासवर्ड वो रिसेट नहीं हो रहा। तो मैंने अब्दुल वासिद साहब से 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कोशिश रिप्लाई करने की, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने ऑडियो मैसेज भी भेजे, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हो जाएगा। अगेन तुम्हारा जो पासवर्ड रीसेट है वो वहीं से होगा, हम नहीं कर सकते पासवर्ड रीसेट, वो थर्ड पार्टी का सिस्टम है। तुम अच्छा पोस्ट एफिलिएट पे जाओगे और तुम लिखोगे, लॉगिन पे जाओगे, ठीक है ना? जी सर। तुम एफिलिएट लॉगिन पे जाके फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करोगे, ठीक है? जी सर। तो ईमेल एड्रेस डालोगे, अपना ये इंटर कोड डालोगे, रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड करोगे, आ जाएगा। इसमें हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो थर्ड पार्टी का सिस्टम है। अच्छा सर मैंने ये किया था, ये फॉरगेट का ना सर मैंने किया था, तो इसमें मुझे रिप्लाई नहीं मिला सर, इसमें मेरे ईमेल एड्रेस पे। जाके अपने उस पे चेक करो, अपने स्पैम मेल पे चेक करो, उस पे चेक करो, उस पे तुम्हें आ जाना चाहिए। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मतलब कि मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी सिस्टम है। मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि भाई ऐसा एक मसला हुआ है, मतलब कि ये इनका तो काम ही है ये सिस्टम चलाना, करना, सब कुछ करना। तुम्हारा नाम क्या है?
सर मेरा email नाम ID खालिद है। इसकी जी ID सर। क्या है? सर मेरा नाम है a.khalid.khan@hotmail.com। देखो आज जिन लोगों ने अपनी पैसे इसमें कमाए हैं उन सबका मुझे लिखा हुआ यहाँ नजर आ रहा है कि आज 7 तारीख को किन किन की पेमेंट्स आई हैं। ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास तो पोर्टल डिफरेंट है तो मैं इसमें जाके देख सकता हूँ। देखो ये अब्दुल बासित, मलिक राजा, आमिर भट्टी, ठीक है, इन सब की पेमेंट्स पाकिस्तानी पेमेंट्स हैं जो भी है सबकी नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही होती है। मैं उस पर देखता हूँ कि जो तुम्हारा इनबॉक्स जो है उसमें कहीं अटका हुआ तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। क्या ईमेल एड्रेस है तुम्हारा? ईमेल सर एड्रेस मेरा बताओ। है a.khalid.khan। जी सर, a.khalid.khan@hotmail.com। अच्छा, मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा तुम्हारा ईमेल एड्रेस। अच्छा सर। खालिद खान जो है, जी सर। खालिद खान की लास्ट रिपोर्ट जो थी वो 1 मई को गई थी और मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि तुम उसके बाद लॉगिन तो नहीं किया तुमने कोई? सर इससे पहले जो अकाउंट में ना सर मैं इससे यानी कि मुझे रिप्लाई नहीं मिला, फॉरगेट पासवर्ड किया तो मैंने वेट किया था, तो वेट कर रहा हूँ लेकिन आउटलुक पे मुझे रिप्लाई नहीं मिला कि पासवर्ड रीसेट हो जाए, तो अच्छा, उन्होंने मैं कहा वेट। जी। देख लेता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड। जी। मैं इसको देख के तुमको बताता हूँ कि क्या मसला है, मगर मैं इसका जी इसका सर। इसका हल करता हूँ और तुमको बताता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अफान आखिरी आदमी है, इसके बाद जिनको एक मसला हो रहा था वो सवाल पूछ लें, देन आई हैव टू गो। जी, अगर हमारी यहाँ माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं तो वो सवाल पूछ सकती हैं हाथ आगे करके। आई विल इनवाइट देम। जी अफान बोलिए, अफान बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, आवाज आ रही हेलो। है। जी जी बोलिए बोलिए, आवाज। सर मैं कैट का स्टूडेंट हूँ। मैंने जी जी मैं कैट का स्टूडेंट हूँ। मैंने स्पेशलाइजेशन भी एनरोल किया हुआ है जो कि मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है सेशंस में। तो और मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ सर, यूनिवर्सिटी में ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने अभी जॉब चेंज किया है, 2 मंथ्स हुए हैं। तो ये जो कंपनी है ये मतलब फिनटेक बेस्ड कंपनी है और मुझे इन्होंने डेवलपर हायर किया है 60,000 पे। और ये लोग यहाँ मतलब यहाँ भी डेवऑप्स वगैरह पूरा इम्प्लीमेंट ये लोग कर रहे हैं और क्या कहते हैं ISO 8583 को फॉलो करते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए ज्यादा, जैसे मैं ब्लॉकचेन का स्पेशलाइजेशन मैंने पहले लिया हुआ था और कैट में अभी इनरोल किया हुआ है मतलब क्वार्टरली उस पे ना। तो अगर मैं जैसे ब्लॉकचेन को पूरा फॉलो कर लूँ तो ये ज्यादा मेरे लिए फायदा हो जाएगा आगे, क्योंकि ये मैं फिनटेक इंडस्ट्री में घुस गया हूँ अब एज अ डेवलपर ना। या मैं फिर डेवऑप्स को आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि वहां भी बातें चल रही होती है अंदर के ये लोग अभी ना हायरिंग कर रहे हैं डेवऑप्स की। तो वो समझे एक 30 पे 6-6 महीने वाले के जो लड़के हैं ना उनको हायर करके पूरी इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो डेवऑप्स इसके हवाले से सर कर दी। अगर तुमने डेवऑप्स सीख लिया तो अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में काम करना है, तुमने एआई में जाना है, तुमने ब्लॉकचेन में जाना है, पब्लिक में है, प्राइवेट में है, तुम्हें बिग डेटा में जाना है, तुमने डेटा साइंस में जाना है, तुमने दुनिया की किसी भी फील्ड में जाना है जिसकी जो सर्विसेज है वो क्लाउड से मिलती है, क्योंकि ऑर्बिटल सैटेलाइट की बात करोगे क्लाउड पे अवेलेबल, तुम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करोगे क्लाउड पे अवेलेबल। अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में जाना है, अगर तुमने डेवऑप्स पढ़ लिया और डेवऑप्स पे तुम्हें काम आ गया, ऑटोमेशन पे तुम्हें काम आ गया, तो तुम दुनिया की किसी भी कंपनी में जाकर ब्लॉकचेन पे काम करना हो, किसी भी काम करना हो कर सकते हो। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आप कर लोगे। तो मैं इसलिए सबको कहता हूँ कैट के साथ साथ ब्लॉकचेन, डेवऑप्स, बिग डेटा और एआई, ये 5 ट्रैक्स ऐसे हैं। ब्लॉकचेन के अंदर भी 2 आते हैं, पब्लिक अलग है, प्राइवेट अलग है। अगर तुम्हें ये 5 ट्रैक्स अच्छी तरह कर लिए, 6 ट्रैक्स, तो तुम अगले 4 साल में तुम यानी कि क्योंकि 1 साल में तुम 3 से ज्यादा ट्रैक्स नहीं कर सकते, रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है ना? वेल पॉसिबल तो है, ऐसे लोग भी हैं कि वो माशाल्लाह यानी कि आई हैव सीन देम कि वो फौरन बैठ के सब खत्म कर लेते, राइट? वो पी जाते सारा।
उनकी मेहनत है, मेहनत इंसान करे तो कर सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो हालात हैं उम्मत मुस्लिमा के अंदर और सब जगहों के अंदर, गाने सुनना, फिल्में देखना, ड्रामे देखना, क्रिकेट खेलना, सब कुछ करना और टाइम जाया करना, बाहर बैठ के चाय पीना, ये सब गलत काम नहीं करने चाहिए। वो सारे काम करते हैं तो इसलिए पीछे रह जाते हैं। सो तुम्हें अगर अगर तुम्हारी ये कोई काम नहीं है तो तुम 3 पढ़ सकते हो, 3 से ज्यादा भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास 3 घंटे हैं रोज के तो तुम 3 ट्रैक्स पढ़ सकते हो। कैट में 1 घंटा लगाओ, ब्लॉकचेन, क्योंकि देखो कैट में 800 घंटे, उसके वैसे तो है ज्यादा 1200 घंटे, 400 घंटे तुम इंग्लिश के निकाल दो क्योंकि इंग्लिश लाइव क्लासेस ज्यादा हो रही है, उसको निकाल दो, 400 800 घंटे वो बचे। ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक जो है, एडवांसमेंट ट्रैक का फायदा ये है कि तुम्हें ना छाप लग जाती है, कि तुम्हारे ऊपर ना लेटर मिल जाता है कि तुमने ये सारा काम कर लिया। ठीक है, कैट तुम्हारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी कि तुम्हें इंडस्ट्री का पता चल जाएगा। और जब तुम इंडस्ट्री में पढ़ोगे तो बोलोगे यार ये ब्लॉकचेन मुझे आती है, मैं यहाँ सब जगह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वहां तुम्हारे सर सारे डेवऑप्स में कितने घंटे? और डेवऑप्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल सैलरीज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में वो 2.5-3 लाख से सैलरी शुरू होती है। तो मैं बहुत 1,60,000 बहुत कम दे सैलरी ज्यादा। मतलब वो लोग अभी फ्रेश जो हायरिंग कर रहे हैं ना, मतलब वो 1-1 लाख पर हायर कर रहे हैं और वो फिर 1-1 साल के बाद ये लोग इंक्रीमेंट 80,000 90,000 इसके इंक्रीमेंट लगाते हैं। ये कह रहा हूँ कि डेवऑप्स अगर तुमने पढ़ लिया, और जो डेवऑप्स हम करा रहे हैं, हम तो सारे टूल्स करवा रहे हैं, तुम पागल हो जाओगे, बोलोगे भाई मैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में उन डेवऑप्स के 10% टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडिया में 20 होंगे, पाकिस्तान में 5 होंगे, 10 भी ज्यादा है, 5 होंगे। सर ये इसमें कितने आवर्स हैं टोटल डेवऑप्स में? 500 से ऊपर घंटे। कैट को 800 है, 500 इसके घंटे। ठीक है, मगर वो तुम्हें बार बार करने हैं। ठीक है, बार बार लैब्स करनी है। तुम देखिए जो बंदा डेवलपर है वो तो फॉरेन कर सकता है, यानी कि इसमें 2.5-3 लाख की जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर। ठीक है, बाहर जाओगे तो वहां तो जॉब ही शुरू होती है 60,000 पाउंड। अमेरिका में $1,40,000, $1,60,000 से फ्रेश बंदे के लिए, फ्रेश के लिए शुरू होती है। और अगर तुम्हें कैट आता है तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर तुम कोई आम डेवऑप्स के बंदे नहीं होगे। तुम बोलोगे भाई मुझे ये सारी इंडस्ट्रीज के अंदर सब काम आता है, आप मुझे बताएं कहाँ बैठ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं अलग लेवल पे जा रहा हूँ। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, कि अगर तुमने इसको पढ़ लिया तो बहुत आगे कामयाब हो सकते हो। तो जाओ पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ो, डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ो, अपने आप को ट्रांसफर करा लो। बोलो मुझे लैब्स भी चाहिए सारी, ये भी चाहिए मुझे, आपका ना रेफरेंस भी चाहिए, क्योंकि एडवांसमेंट ट्रैक वाले को रेफरेंस मिलता है। स्पेशलाइजेशन में कोई रेफरेंस नहीं, कोई टीचर का एक्सेस नहीं है, कोई लाइव टीचर नहीं बैठता, कुछ नहीं होता। अभी सर मैंने कैट लिया हुआ है और ब्लॉकचेन स्पेशलाइजेशन पहले लिया था, वो तो समझे कंप्लीट कर लिया, सिक्योरिटी वाला कोर्स चल रहा है उसका। ठीक है, तो सही है, उसको खत्म भी कर दिया हम लोगों ने। तुम्हारे पास मौका है पूरा, तुम जाओ अपने बैठ के पढ़ो, तैयारी करो और लैब्स करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, ट्रांसफर कराना है, बात करनी है। यहाँ पर तुम्हें एड ऑन लेना पड़ेगा, डेवऑप्स का जाके एड ऑन ले लो, बोलो यार मुझे काम शुरू करवाना है, मुझे आप दे दे, यू कैन डू इट इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर कुछ सवाल पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने लिखे। ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूँ। हर ट्रैक अलग अलग है, आरएस कैट अलग है, डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक अलग है। डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक के अंदर कैट शामिल है। हम आगे जाके कैट को खत्म कर देंगे, सिर्फ हमारे बड़े बड़े एडवांसमेंट ट्रैक्स होंगे। ठीक है, कि जिसको जो पढ़ना है वो कैट के साथ उसको पढ़े। लेकिन वो 1-1.5 साल के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा। जस्ट वांटेड टू गेट क्लैरिफिकेशन अबाउट नाफे, ये तो मैं जवाब दे चुका हूँ मसलन आपको। हाई पेइंग जॉब जावेद हसन आप कह रहे हैं, तो वो जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो, वो कंसल्टेंट्स कमाते हैं। अगर आपके पास बिग डेटा और इन तमाम चीजों को काम आता है तो फिर ट्रैवलिंग काफी अच्छी है। बिग डेटा, एआई, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन, पब्लिक प्राइवेट, तो फिर तुम उस लेवल पे जा सकते हो। कर्दल हसना उमर, कर्दल हसना नहीं है ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आपको कर्दल हसना जो है सिर्फ कैट के अंदर है, वो भी हमने वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि अपनी फीस खुद निकालो। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि खुद जो है ना वो अपनी फीस निकाल सको। ठीक है जी, यहाँ पर अगर किसी ने सवाल पूछना है तो पूछिए। अगर यहाँ पर हमारी कोई माए बहनें बेटियां बैठी हैं तो वो पूछ सकती हैं। सना खान, मुझे नहीं मालूम कि क्या है टाइमिंग ऑफ क्लासेस 9:45, मैं इनसे अभी पूछ भी लेता हूँ।
कि ये क्या है और किस तरीके से है। मैं अभी इनसे इसके बारे में अभी बात करके आपको बताता हूँ, ठीक है? जी शिराज बोलिए आप। ये बोलिए शिराज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अच्छा, मैंने CCI वॉइस किया हुआ है, मेरा वाइप का बैकग्राउंड है, और कैट का प्रोग्राम मैंने जनवरी में शुरू किया था। तो मैंने CISSP और CIS टॉप 20 कंट्रोल्स, पाइथन, लिनक्स ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि कैट के अंदर कोई ऐसा ट्रैक है जिसमें वाइप की इंटीग्रेशन हो, कोई है ऐसा, या वाइस वर्सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अच्छा। जरूर है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की एडवांसमेंट ट्रैक लेकर आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एडवांसमेंट ट्रैक, जिसमें SDN है, NFV है, SDN बेस्ड वाइप है, सर्विसेज है, वो सारी है। मगर उसके लिए आपको डेवऑप्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में काम करना है, डिफाइंड नेटवर्किंग, तुम्हें डेवलपमेंट आनी चाहिए, ठीक है? तो अब जो सारा काम है वो सारा का सारा जो है वो क्लाउड के जरिए हो रहा है। इवन वॉइप जो है वो भी क्लाउड के जरिए चल रही है, एज यू ऑलरेडी नो। इवन सिप सर्विस वो भी क्लाउड के जरिए चल रही है, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उस तरह हो गई है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें एज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में जाना है, डेवऑप्स पढ़ लो। डेवऑप्स से तुम्हें बहुत फायदा हो जाएगा, तुम छा जाओगे सब जगह। Amazon पॉली की जो सर्विसेज है सारी, वो उनकी वॉइप सर्विस, ठीक है। लेकिन डेवऑप्स के लिए एक्सटेंसिव डेवलपमेंट का नहीं बैकग्राउंड चाहिए होता? मेरा कोई डेवलपमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एडवांसमेंट ट्रैक डिजाइन किया, उसमें जीरो एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तुम बन जाओगे। बट यू नीड टू हैव द विल कि तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। और ब्लॉकचेन का भी सेम, उसमें भी डेवलपमेंट का चाहिए होता है बैकग्राउंड, तो अगर मैं उसमें जाना चाहूँ तो? ब्लॉकचेन के अंदर भी हमने तुम्हारे लिए 11 घंटे का पूरा डेवलपमेंट कोर्स रखा है कि ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को पाइथन पे मुख्तलिफ ज़बानों में कैसे डिजाइन डिप्लॉय कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, वो हमने किया है। बट द पॉइंट इज, हाँ वो किया है। तुम्हारा उसके वॉइप के अंदर एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तुम इसको इन्फ्यूज करो डेवऑप्स के साथ, ब्लॉकचेन के साथ। कैट तो तुम्हें बेसिक कर ही रहे हो उसके साथ, ठीक है ना? डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक, पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक, तो तुम बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से बहुत आगे जा सके काम कर सकते हो। अपने आप को मॉडिफाई करो, क्योंकि वॉइप जो है ऑलरेडी क्लाउड की तरफ जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। ये वैन भी जो है, आज से तुम जाओ सर्च करो इंटरनेट पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब मैंने NSX पे काम किया था, देखो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है मोहम्मद फैसल NSX, ठीक है ना? VMware CBOS 2015 में मैंने इस पे काम शुरू किया था। 2012-13 से हमने शुरू करके काम कर दिया था। उस जमाने में मैंने जो है ना इसको डिप्लॉय किया था। सो यू कैन सी कि दुनिया कितनी तब्दील हो चुकी है। उस जमाने में मैं जो था SDN पे काम कर रहा था, और हमने सारी की सारी VMwares के ऊपर जो ना, मैं उस टाइम पर सिस्को ACI सब चीजें चेक कर चुका था। दिस इज मी, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, राइट? जी, ठीक है। तो मैंने सिस्को ACI को, जूनिपर कॉन्ट्रेल को, सबको असेस किया था, हमारा काम था। और हम उस टाइम पर तमाम चीजों को SDN पे ले जा चुके थे। 2015 और 2022, कितने साल हो गए? 6, 7, 8 साल, 9 साल। जी दुनिया तब्दील हो चुकी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखता हूँ तो खत्म हो गया, तो SDN भी अलग हो गया भाई। वो तो SD WAN के ऊपर मैंने पिछले 3 साल पहले 2016 में SD WAN की माइग्रेशन वगैरह सब मैंने की थी। तो वो तो दुनिया बहुत खत्म हो गई है भाई अब तो खुद जो है अपना एक क्लाइंट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, सब चीजों के लिए। सो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम अगर पढ़ लेते हो और जो तुम्हारे में एक्सपीरियंस है वो काम आएगा तुम्हारे। ऐसा नहीं कि तुमने टाइम जाया किया, नहीं, मगर तुम उसके ऊपर फाउंडेशन बना के बहुत आगे जा सकते हो। अगर तुमने नहीं किया तो तुम, ठीक है। तो मैं डेवऑप्स से स्टार्ट करूं या ब्लॉकचेन से स्टार्ट करूं? आपका क्या मशवरा है? पहले किसको करूं? दोनों में हम डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। डेवऑप्स
तो अगर तुम्हारे पास टाइम कितना है, टाइम कितना है तुम्हारे पास? तो टाइम मेरे पास फुल टाइम जॉब है। अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मेरी फ्लाइट है, मैं कनाडा आ रहा हूँ। तो फुल टाइम जॉब है सुबह से शाम तक, तो फिर शाम को मेरे पास टाइम होगा तो मैं 4 घंटे तो दे सकता हूँ एटलीस्ट। कब आ रहे हो कनाडा? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 17 को। आने से पहले पहले नेक्स्ट वीक 17 को आ रहे हो, बहुत करीब हो अभी, ठीक है। जी जी। जाओ बैठ के पढ़ो, अभी डेवऑप्स पढ़ना शुरू करो, ठीक है। 3 महीने तुम्हें लगेंगे उन सब चीजों को कंट्रोल करने में। और अगर तुम ब्लॉकचेन पढ़ते हो तो अगेन टाइम तुम्हारे पास फुल टाइम जॉब है ना। यहाँ पर तुम फुल टाइम जॉब कहाँ कर रहे हो? बेल में कर रहा हूँ, बेल कनाडा। बेल कनाडा में कर रहे हो, ठीक है, सही है। आई मीन मेरा मशवरा ये होगा भी कि तुम ठीक है अभी काम करो, थोड़ी सी मेहनत करो जरा इसके ऊपर, और थोड़ा टाइम लगाओ। 3 महीने 4 महीने तुम्हें लगेंगे इससे पहले कि तुम डेवऑप्स की इंडस्ट्री में उतर सको। वो मैं बिल्कुल तैयार हूँ काम करने के लिए, वो है कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं फिर डेवऑप्स मुझे ऐड ऑन लेना पड़ेगा फिर कैट के साथ डेवऑप्स का। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कर लेता हूँ इस पे शुरू। आसिफ नदवी बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फैसल भाई, मैं कह रहा था आज से 1.5 महीना पहले मेरी आपसे बात हुई थी, फिर आपने कहा था कि कर्जा हंसाने के लिए आप अप्लाई करें। मैंने कर्जा हंसाने के लिए अप्लाई करा, रमजान में मैंने कुरान सुना है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज से 1 महीना हो गया मुझे कर्जा हंसाने के लिए अप्लाई किए हुए, मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तारिक महमूद को भी मैंने अपनी वो ईमेल की है, वो एप्लीकेशन। तारिक महमूद तो 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने तो जी। बहुत कम जवाब दिए होंगे। और देखो सरफराज है मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, जी। ठीक है ना, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको पढ़ना, ठीक है। वो ये है कि जो है ना, तुम्हें अपने आप को मजबूत कैसे करना है। वो तुम्हारी एप्लीकेशन कहाँ पर है? बहुत सारी एप्लीकेशन उनके पास है, वो एप्लीकेशन पे टाइम ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। वो एक अलग डिपार्टमेंट है, मैं हर किसी को बैठ के नहीं देख सकता। ये अबू दाऊद की हदीस है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्टेड है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ठीक है ना, और वो कह रहा था कि भाई कि वो ना मदद मांग रहा था कि भाई मेरी मदद करें, मुझे मैं परेशान हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव यू नथिंग इन योर हाउस, तुम्हारे पास कुछ घर में है? उसने कहा हाँ, 2 कपड़े हैं। यस, अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ पार्ट ऑफ व्हिच वी वेयर, अ पार्ट ऑफ व्हिच वी स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। 2 कपड़े हैं, एक से मैं उड़ता हूँ, एक को जमीन पे बिछाता हूँ, ठीक है ना। वुडन बोल, और जिससे पानी पीता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने जवाब दिया कि भाई मेरे पास ये सारी चीजें। उन्होंने कहा ठीक है, सही है। उन्होंने कहा जाओ कपड़े का लेकर आओ, ब्रिंग देम टू मी, लेकर आओ। द मैन ब्रॉट दीज आर्टिकल्स टू हिम एंड प्रॉफिट टुक देम इन हिज हैंड्स एंड सेड हु विल बाय दीज। उन्होंने कहा कौन है जिसको खरीदता है, ठीक है। Someone said I will buy them for 1 coin. The prophet said twice or thrice, ठीक है ना। तो एक आदमी ने दे दिया, उसने खरीद लिए 2 कॉइन्स, उसने खरीद लिए। He sold them for 2 coins and the prophet said buy food with 1 of them and give it to your family. उन्होंने कहा 1 कॉइन से तुम लो, जाओ अपने घर का खाना दो, और दूसरे को बोला कि कुल्हाड़ी लो, लकड़ियां काटो, और उसको जो है ना, उसको अपनी लिए जमा करो और उसको जाके बेचो, ठीक है ना। डू नॉट लेट देम सी फॉर अ फोर्टनाइट। ये पूरी एक लंबी हदीस है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फरमाया दिस इज बेटर फॉर यू देन फॉर बेगिंग टू कम एज ब्लेमिश ऑन योर फेस ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन। जो लोग मांगते हैं ना किसी से कि यार मेरी मदद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, अल्लाह ताला क़यामत के दिन को उठाएंगे और वो उनके मुंह पे ना निशान लगे हुए होंगे। बेगिंग इज ओनली अप्रोप्रिएट फॉर 3 पीपल। सिर्फ 3 लोगों के लिए बेगिंग है, वो कि जो बहुत सख्त पॉवर्टी में है, वो जो बहुत सख्त डेट में है, एंड वन हु पेज अ डिफिकल्ट कंपनसेशन, और जो बहुत डिफिकल्ट किसी को पैसे दे। ये अबू दाऊद की हदीस है, ठीक है ना। तो ये शेख अलबानी ने इसको वेरीफाई भी किया। तुम्हारे पास पूरा एफिलिएट का प्रोग्राम मौजूद है, तुम्हारे पास पूरा एक एफिलिएट का प्रोग्राम मौजूद है। जाओ उस एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर हो, बजाय इसके कि तुम 1 महीने तक तुम बैठ के टाइम जाया करते रहे, तुम जाके यहाँ पर जाते, एफिलिएट प्रोग्राम पे जाते, nafi.com पे एफिलिएट प्रोग्राम पे जाओ, यहाँ रजिस्टर हो, ताकि तुम्हारे पास इतने पैसे हो कि तुम अपना वो खर्चा भी निकाल सको। जाओ यहाँ पर साइन अप करो,
कैसे करना है, क्या करना है, हर चीज वहां बताई हुई है। उससे तुम्हारी मदद होगी, तुम्हारे कमर मजबूत होगी। इतने लोग उस पर पैसे कमा रहे हैं, तुम्हें किसने रोका है? अपने अपनी तालीम के लिए पैसे निकाल सकोगे। ये भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने 1 महीना जाया कर दिया इस चक्कर में कि यार मुझे वहां से जवाब आएगा, जवाब आएगा। वो तो उनके जी पास तो एप्लीकेशन का पहाड़ लगा, वो किस किस का जवाब है? ठीक है, जी टाइम लग रहा है उनको। पॉइंट इज कि तुम्हारे पास पूरा मौका है, इसको इस्तेमाल करो। सबके लिए जो यहाँ बैठे हुए, जो यहाँ पर, उसके लिए जो मुश्किलात हैं, ये एक आसान तरीका है। ठीक है, जी चीज चाहिए होती है ना, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता हूँ, बोला अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। अभी कोरोना वायरस भी है, उसके बावजूद भी बैठा हुआ काम कर रहा हूँ। इट डजंट मैटर। ठीक है जी, अरीबा बोलिए। बस ये आखिरी सवाल है, फिर मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ और तकरीबन 1 साल है मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट होने में। और मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में देखा था, मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यानी कि ज़रूरत क्या है और मैं क्या चाहती हूँ, ताकि आप मुझे बेहतर तौर पर गाइड कर सकें। एक्चुअली में मुझे मेरे भाई ने बताया था इस प्लेटफॉर्म के मुतालिक, और तकरीबन मेरा भी फ्यूचर में यही है कि मैं किसी कंट्री में जाऊं और जॉब करूं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। तो आपको बेहतर पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कैट इंपॉर्टेंट रहेगा, और 2-3 चीजें आपने और भी बताई हैं, डेवऑप्स और ब्लॉकचेन, ये सब चीजें। तो मुझे नहीं पता कि इन क्या है और क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो आप मुझे इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। के ऊपर मैंने जो पूरी प्रेजेंटेशन शुरू में बताया है, इसी के ऊपर बात की है। अगर आप अभी बीच में आई हैं तो आप शुरू में, जब ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, आप जाके इसको दोबारा सुनिए, उसमें सब बता दिया है। हमारे जो माएँ बहनें बेटियां हैं, वो घरों में से बैठकर डेवऑप्स की जॉब्स कर सकती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठकर 1.5 2 लाख रुपए का महीना कमा सकती हैं, अगर उनको उस पर उन्होंने मेहनत करके काम कर लिया। ब्लॉकचेन भी ऐसा ही है, डेवऑप्स भी ऐसा ही है। दोनों के एडवांसमेंट ट्रैक्स इसके काबिल हैं कि आपको इस काबिल बना सकते हैं। 3 से 6 महीने में बना सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो काम आपका है, हम आपको तरीका बता सकते हैं, लेकिन मेहनत करना आपका काम है। राइट? देखिए, मोमिनीन थी जो बेरिया रदियल्लाहु अन्हा, अल्लाह कमी में शिफा फरमाए, वो बैठ के ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, देखा वो नमाज पढ़ रही थी, वापस आया, नमाज पढ़ी। मैंने कहा भाई क्या हो, तुम सुबह से बैठी हुई? उन्होंने कहा हाँ मैं बैठी हूँ। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें एक इल्म बताता हूँ, ठीक है ना, जिसको अगर तुम पढ़ोगी तो ना, सुबह और शाम के लिए ऐसा है कि तुम सुबह से लेकर शाम तक इबादत कर रही हो, अल्लाह ताला लिखा। तो फरमाया कि वो दुआ है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ठीक है, सुब्हानल्लाहि यानी कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, अदद खल्क़िही जितनी मखलूकात हैं, व रिदा नफ्सिही वो है। ठीक है ना, ये बड़ी मुस्तनद दुआ है जो हम सब पढ़ते हैं। सुबह शाम 3 दफा पढ़नी चाहिए, सुबह और फजर के बाद, असर के बाद। तो मैं आपको एक इल्म बता रहा हूँ कि भाई अगर आप 2.5-3 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए घर से बैठ के कमा रही होंगी, अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप दुनियावी इल्म को कैसे पकड़ती हैं और दीनी इल्म को कैसे पकड़ती हैं। दिस इज फॉर यू। दुनिया में क्या करना है मैं आपको, आखिरत में क्या करना है वो रसूल। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू गो नाउ। इंशाल्लाह फिर संडे को मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगा। मेरी कोई क्लास नहीं है आज, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। मुझे आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिलीज करने, अब वो फाइनल हो गए लेक्चर्स, तो मैं वो जो है ना उसको रिलीज कर दूंगा इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। हमारा जो 62443 का पूरा प्रोजेक्ट है वो 21 तारीख को खत्म हो जाएगा, 21 मई को खत्म हो जाएगा। बाकी उसकी जितनी चीजें होंगी वो स्केडा के एडवांसमेंट ट्रैक में आएगी। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई स्केडा का एडवांसमेंट ट्रैक कहाँ है, किधर है, कैसे है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है ना, स्केडा का एक एडवांसमेंट ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा स्केडा का एडवांसमेंट ट्रैक है। इससे आगे जो चीजें होंगी आपको वो वहां मिलेंगी, जिसमें रैंसमवेयर अटैक्स हैं, IoT की लैब्स हैं, और माइटर अटैक की लैब्स हैं, और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो कि आपको अलग से मिलेंगी। लेकिन ये एडवांसमेंट ट्रैक है जो अभी हमने रिलीज नहीं किया, ये अलग से ट्रैक है। ठीक है ना, जैसे मैं सबको बताता हूँ कि हमारे मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं बहुत सारे, और उन सब ट्रैक्स के अंदर जो आप लोग पढ़ रहे हैं कैट,
उसमें आपको अ लिटिल बिट ऑफ एवरी ट्रैक में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी कि आप काम पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी है तो हमेशा आप 3-4 ट्रैक्स पकड़ के चलें, 2-3 ट्रैक्स पकड़ के चलें, जितनी आपकी माशी इस्तिताअत है। माशी इस्तिताअत अगर नहीं है तो भाई माशी इस्तिताअत बनाओ, ठीक है। ये जो है ना nafe.com पे जाओ, ठीक है, एफिलिएट पे जाओ और वहां पर साइन अप करो, और जो सेल होगी उसका 8% तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि तुम वो करो। खुर्रम शहजाद, हमारा अपना एफिलिएट प्रोग्राम का लाने का भी कोई इरादा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो वो चीज चल रही है ना उसमें सब चीजें आ गई। तो अभी फिलहाल मैंने चेंज कर दिया अपना वो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं अभी बिल्कुल भी अपना एफिलिएट प्रोग्राम नहीं लेकर आ रहा, अगले 3 साल के बाद सोचूंगा कि क्या है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड है काम का। तो मैं उस काम के हिसाब से देख कर डिसीजंस लेता हूँ कि क्या करना चाहिए, ठीक है। टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है ये है, इसमें जिसकी जो पेमेंट्स आती है तो मैं नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैं ला नहीं सकता, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।